Hello everyone, this is Abhilip Shamapatra and welcome to GeoQuest. Today we'll discuss Class 9 Chapter 2, that is Physical Features of India. India is a country of amazing physical diversity. From the mighty Himalaya in the north to the coastal plain in the south, from the desert region of Rajasthan to the fertile Indo-Gangetic plain, and from the islands in Arabian Sea and Bay of Bengal to the plateaus in center. In this chapter, we'll understand how these physical features were formed, what makes them unique, and why they are so important for our country's climate, culture, and economy. So, let's explore incredible information of India step by step. So, before starting the chapter, let's have a brief outline that what are the things that we are going to discuss in this chapter. So, starting from the intro, India's diversity, physical features, then major physical diversity of India, the Himalayan mountain, the northern plain, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plain and the island and its significance. So let's start the topic from the beginning. You have already learned earlier that India is a vast country with various landforms. तमे पूर्वरु पढ़िଛ कि इंडिया होचे बहुत बड़ कंट्री. तमे 6th रे पढ़िथिबो कि मेंशन अछि कि इंडिया होची 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. तो एते बड़ कंट्री रे तळे तार फिजिकल फीचर तार क्लाइमेट सब किछ बहुत डाइवर्स हेतिबो. तो से कहूची कि एदरे बहुत वेरियस लैंडफॉर्म अछि. What kind of terrain do you live in? If you live in the plain, you are familiar with the vast stretches of plain land. In contrast, if you live in hilly region, the rock terrain with mountains and valleys are common features. In fact, our country has practically all major physical features of the earth: mountains, plain, desert, plateau and island. तो तमे को टाइप रो एरिया रे रहउछ, को जागा रे तमे बसति स्थापन करिछ, तम घर कोठी, ता ऊपर डिपेंड करे कि तमे को टाइप रो क्लाइमेट, को टाइप रो एनवायरनमेंट, को टाइप रो फिजिकल फीचर को फील करिथिबो. ऑल्दो इंडिया रे बहुत वेरियस क्लाइमेट अछि, बहुत वेरियस फिजिकल फीचर अछि, तमे तो गोटे पर्टिकुलर जगह रे रहउथिबो ना, तो तमको से पर्टिकुलर एरिया रो ही आईडिया थिबो. The land of India displays great physical variation. Geologically, the peninsular plateau constitutes one of the ancient landmass on the earth's surface. तो geologically कहले peninsular plateau होची one of the ancient landmass, माने बहुत पुराना landmass. It was supposed to be one of the most stable land block. इटा होची most stable land block. The Himalayas and northern plain are the most recent landforms from the viewpoint of geology. और geology viewpoint रे कहया गले हिमालय और northern plain जो हमर अछि सेटा होचे most recently तयारी हेतिबा landform. From the Himalayan mountains form a unstable zone. The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peak, deep valley and fast flowing river. तो तमे जदि हिमालयन माउंटेन को देखिबो, जदि इमेज रे देखिथिबो नहले केही जदि बुलिबा को जाइथिबो, देखिबा को पाइबो कि बहुत बड़ बड़ माउंटेन अछि, बहुत वैली अछि, बहुत माने वेराइटी जिंसो तादरे पाइबो. माउंटेन भी अछि, वैली भी अछि, फास्ट फ्लोइंग रिवर भी तादरे अछि. तो माने हिमालयन माउंटेन भीतर पे बहुत सारा जिंस तुमको मिली जीवा. The northern plain are formed of alluvial deposits. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hill and wide valleys. तो northern plain रे कोन अछि? Alluvial deposit अछि, आउ peninsular plateau रे कोन अछि? Igneous and metamorphic rock को नेकी peninsular plateau form हेछि, जोथि के बहुत wide valley अछि. Major
Physiographic division. The physical features of India can be grouped under the following physical division. आमे जदि इंडिया रो फिजिकल फीचर को डिस्क्राइब करबा ए छटा फिजिकल डिवीजन हबो कोन कोन द हिमालयन माउंटेन द नॉर्दर्न प्लेन द पेनिनसुलर प्लेट्यू द इंडियन डेजर्ट द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड एटा होचे छटा फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया तो आमे ए छटा टॉपिक को पूरा डिटेल लेबे पढिबा लेट्स कम टू द टॉपिक द हिमालयन माउंटेन The Himalayas, geologically young and structurally fold mountain, stretches over the northern border of India. Himalaya जो Himalaya mountain range अछि सेटा कोन geologically young माने बहुत recently सेटा form हेछि और structurally fold तार structure कोन सेटा गोटे fold mountain. This mountain range is run in west-east direction from the Indus to Brahmaputra. ଆଉ हिमालय रेंज जो अछि सेटा इंडिया रो नॉर्दर्न साइड रे अछि आ यार डायरेक्शन कोन वेस्ट रु ईस्ट आडकू माने वेस्ट इंडस पाखरु स्टार्ट हेचे ईस्ट रे ब्रह्मपुत्र जो हमर अछि ब्रह्मपुत्र पाखरे से सरीची द हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रॉक माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड तो हिमालय होची लॉफ्टीएस्ट आ वन ऑफ द मोस्ट माने सबुठो बड़ माउंटेन बैरियर माने इत्ते लगातार इत्ते कंटीन्यूअस माउंटेन आउ कोठी नाही केवल हिमालय रे तुमको देखिबा को मिलिबो इत्ते कंटीन्यूअस माउंटेन दे फॉर्म एन आर्क व्हिच कवर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर से जो आर्क ता हिमालय फॉर्म करछि नॉर्थ रु आसी के पूरा जम्मू एंड कश्मीर जोठी हमर इंडस नदी अछि सेठु आसी के पूरा एपटे ईस्टर्न साइड रे पूरा टॉप बंकी की जो अछि हमर ब्रह्मपुत्र पाखरे तार लेंथ केते डिस्टेंस केते 2400 किलोमीटर देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश अतः विड्थ वेरिएशन केते कश्मीर पाखरे 400 किलोमीटर आ अरुणाचल प्रदेश पाखरे 150 किलोमीटर तो हम एक मैप देखि दबा हिमालय तो एठू स्टार्ट है कि हिमालय ए जो एमती पूरा देखुचो एठू ए जो ब्राउन कलर एरिया गुडा तमे देखुचो एटा टोटल हिमालय माने इंडिया रो टॉप पार्ट जो ब्राउन कलर एरिया तमे एबे देखुचो एटा होची हिमालय आ ए रीजन ने तार विड्थ होची 400 किलोमीटर आ ए रीजन बाखु को पळे आसिले तार विड्थ केते होची 150 किलोमीटर आ पूरा एई साइड हम यदि स्टार्ट करू जो एपटे 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 एमती बुली ए टर्निंग पाख को यदि पूरा जीव तार लेंथ केते हबो 2400 किलोमीटर्स the altitudinal variation are greater in the eastern half than those of the western half आ जो altitude height और variation eastern half रे बेसी western half comparison है The Himalaya consists of 3 parallel ranges in the longitudinal extent. A number of valleys lie between these ranges. The Himalaya parallel ranges तीनटा अछि केमती ना parallel ranges के तीनटा अछि कोटा कोटा माने एमती गोटे लाइन तापरे ता पपरे गोटे लाइन जोटा एटा देखुजो फास्ट एटा गोटे लाइन तापरे एटा देखो एटा गोटे लाइन तापरे एटा गोटे लाइन तो तीनटा parallel ranges रे हिमालय को डिवाइड करा हिची ता भीतर तुमको कोन मिलिबो ना बहुत सारा वैली मिलिबो द नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस इज नोन एज ग्रेटर और इनर हिमालय और हिमाद्री इट इज मोस्ट कंटीन्यूअस रेंज कंसिस्ट ऑफ लॉफ्टीएस्ट पीक विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स तो नॉर्दर्न पार्ट रे जो टॉप मोस्ट पार्ट जो ए लाइन ता ऊपर लाइन ता फास्ट लाइन ए जो फास्ट लाइन ता तमे देखुचो ए लाइन टा होची कोन या नाटा कोन ग्रेटर और इनर हिमालय नहले हिमाद्री भी कहि पायो आ यार जो पहाड़ गुडा थाए पहाड़ गुडी को थाए यार हाइट केते थाए 6000 मीटर्स एटी किछि टॉप पिक्स गुडार ना लेखा हेछि आ ता सहित तार हाइट मेंशन अछि द folds of greater Himalayas are
asymmetrical in nature. The core of this part of Himalaya is composed of granite. तो यार जो फोल्ड अच्छी एटा asymmetrical in nature माने तार सिमेट्री नाही ता दीते जगह जदि आमे तुमे फोल्ड सीनियर क्लासेस पढियो फोल्ड केमति थाए माने एमती जदि दी साइड रो माने दीटा जाक लिम्ब ए जो एटा गोटे लिम्ब आउ एटा गोटे लिम्ब जदि दीटा जाक लिम्ब रो inclination आउ लेंथ सेम थाए ताकू कह जाए सिमेट्रिकल फोल्ड किंतु यार जो inclination अलगा अलगा माने कोटा बेस को गोटे साइड होता बेसी इंक्लाइन करथिबो गोटे साइड कम इंक्लाइन करथिबो आउ लेंथ भी दी साइड अलगा अलगा तो सेटा को कह asymmetrical fold. The core of this part of Himalaya is composed of granite. आउ हिमालय रो कोर हिमालय रो भितरटा कोथि तयारी हेछि ग्रेनाइट रे. Find out the name of the glaciers and passes that lies in the greater Himalayas. ग्रेटर हिमालय रे जो भी passes अछि जो भी ग्लेशियर अछि तार ना कोन फाइंड आउट करिया को कुहाइछि. The name of the states where the highest peak are located. आउ से स्टेट गुडार नेम फाइंड आउट कर जोठी सबुठ हाईएस्ट पीक गुडा जो मेंशन अछि जो पीक गुडा से गुडा लोकेट अछि. The range laying to the south of the Himalaya forms the most rocked mountain. तो आउ जो रेंज टा साउथ ऑफ हिमालय अछि माने हिमालय रो सदर्न पार्ट रे अछि सेटा होछि मोस्ट रॉक्ड माउंटेन सिस्टम इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय माने फर्स्ट जीव ग्रेटर हिमालय तापरे लेसर हिमालय माने मिडिल हिमालय टा जोटा सेटा कहे लेसर हिमालय. द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हायर कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक. आउ सेटा कोथरे तयारी हेछि हायर कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक रे तयारी हेछि. द altitude varies between 3700 to 4500. फर्स्ट थिला 6000 सेकंड लाइन टा कोन आसला 3700 टू 4500 माने ए लाइन रे जो माउंटेन गुडा अछि से गुडा 6000 फीट तापरे ए जो सेकंड लाइन टा अछि सेकंड लाइन जो भी माउंटेन अछि तारा हाइट केते 3700 टू 4500 आ तारा विड्थ केते 50 किलोमीटर ता विड्थ. While the Pir Panjal range forms the longest and the most important range. Our Pir Panjal range होची most longest और most important range. The Dholidhara and the Mahabharata range are also prominent ones. आउ एटी को range अछि धौलीधर भी अछि महाभारत बोली गोटे range भी अछि. The ranges consist of the famous valley of Kashmir. आउ काश्मीर जति के फेमस वैली अछि सेटा एई रेंज रे ही लोकेट करूची. द कांगरा द कुल्लू वैली द हिमाचल प्रदेश एगुडा. दिस रेंजेस इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन. आउ एई जो सेकंड रेंज जोटा हमर कोहाउची हिमाचल बा लेसर हिमालय सेटा फेमस कोन पई ता हिल स्टेशंस पई. फाइंड आउट लोकेशन ऑफ मसूरी नैनीताल Ranikhet from your atlas and also name the state where they are located. Mussoorie, Nainital ଆଉ Ranikhet ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ହିମାଚଳ ରେ ହିଁ ଲୋକେଟ କରୁଛି. ତ ଏଇଟା କୋଉଠି ଲୋକେଟ କରୁଛି ତାର ଲୋକେशन ବାହାର କରିବ ଆଉ ତାର states କଣ ତାକୁ find out କରିବ. The outermost range of the Himalaya is called Shiwalik. और जो तले सबुठु लास्ट लेयर जोटा रहिला सेटा होची Shiwalik. They extend over a width of 10 to 15 kilometer. तो Shiwalik रो रेंज रो width केते थाए 10 to 15 kilometer and have a altitude varying between 900 to 1100 meter. और तार altitude बंदा height केते थाए 900 to 1100 meters. These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers. तो हमर जो शिवालिक रेंज थाए सेटा कोन सबटु लास्ट रे तो जेताले रिवर सेडिमेंट्स को आने माने पहाड़ ऊपर धोई धोई आनिला रिवर द एंड ऑफ शिवालिक रेंज रे ना. तो शिवालिक रेंज चा कोथि फॉर्म हेची अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट रे फॉर्म हेची जोटा कि रिवर ने के आस्ता है. Himalayan ranges laid further north. The longitudinal valleys lying between lesser Himalaya and the
Shiwalik are known as dunes. तो जो longitudinal values गुड़ा अच्छी lesser Himalaya और Shiwalik भितरे ताकु आजे dunes. Valley माने जो low lying area गुड़ा था ताकु आजे dunes. Dunes माने भी valley. तो डेरा dunes, कोटली dunes, कतली dunes एमती किसी dunes रो ना एटी मेंशन कराइछि. Besides the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of region from west to east. These divisions have been demarcated by river valley. तो एमती तो कौन नॉर्थ साउथ डिवीजन हमें देखिले नॉर्थ साउथ डिवीजन हमें देखिले कौन ना फास्ट गोटे डिवीजन जोटा ग्रेटर हिमालय तापरे एटा सेकंड आसला लेसर हिमालय थर्ड आसला शिवालिक किंतु हमर नॉर्थ साउथ डिवीजन को छाड़ी के हिमालय रो ईस्ट वेस्ट डिवीजन भी अछि माने एमती ताकू डिवाइड करा हिची एमती गोटे एमती गोटे एमती गोटे एमती गोटे एमती चारिटा पार्ट रे ताकू डिवाइड करा हिची जोटा कि रिवर सहित एसोसिएट हे के अछि. फॉर एग्जांपल द पार्ट ऑफ हिमालय लेइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय जोटा इंडस और सतलुज मझी रे अछि सेटा होची पंजाब हिमालय. तापर कोन आसला but it is also known as regions as Kashmir and Himachal Himalaya. Kashmir and Himachal Himalaya from west to east respectively. तो यार other name कौन Kashmir Himalaya और Himachal Himalaya भी यार name करा है जी. The part of the Himalaya laying between Satluj and Kali river is known as Kumaun. Indus और Satluj मझे रहिला पंजाब हिमालय सतलुज और काली मझे रहिला कुमायून हिमालय. तापर कोन आसला द काली और तिस्ता भीतर कोन रहला नेपाल हिमालय. द काली एंड तिस्ता रिवर डिमार्केट द नेपाल हिमालय. काली और तिस्ता मझे रहले ओटा एटा कोन नेपाल हिमालय. एंड द पार्ट लेइंग बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज आसाम हिमालय. तो एबे बुझि पालो कोन कोन इंडस और सतलुज मझे जोटा रहले हेटा होची पंजाब हिमालय. सतलुज और काली मझे जोटा रहले हेटा होची कुमायून हिमालय. काली और तिस्ता मझे जोट रहले हेटा होची नेपाल हिमालय. तिस्ता और दिहांग मझे जोट रहले हेटा होची आसाम हिमालय. There are regional name also in this broad categories. Find out some regional name of the Himalaya. और यार regional name भी अछि माने सा लोकालिटी अनुसार ता से जो एरिया रे अछि से हिमालय ता अनुसार भी तार नामकरण कराइछि तो ताको फाइंड आउट करिया कुआइछि. The Brahmaputra maps the easternmost boundary of the Himalaya. अब ब्रह्मपुत्र होचे हिमालय रा ईस्टर्नमोस्ट बाउंड्री माने ईस्ट जोटी हिमालय सहुचे सेठी ब्रह्मपुत्र अछि. Beyond the Dihang Gorge, the Himalaya bend sharply to the south and spread along with the eastern boundary of the India. They are known as Purvanchal or the Eastern Hill and Mountain. तो Dihang Gorge पाखरे माने एई एरिया रे रु हिमालय टा एई पटे बंकीची टर्न करिची तो सेही जिंसटा विषय एठी कुहा होची कि बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालय बेंड्स शार्पली इन द साउथ डायरेक्शन सेठी साउथ डायरेक्शन ने मोड़ी जाईची बंकी जाईची जोटा को कि पूर्वांचल कुहा जाय. These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstone. और ए जगह रे बहुत भलो सैंडस्टोन मिले. दिस आर सेडिमेंटरी रॉक्स. सैंडस्टोन गुडा कोन सेडिमेंटरी रॉक माने डिपॉजिट हे जी covered with dense forest. They mostly run as parallel ranges and valleys. और ए जगह कोन dense forest रे कवर और एटी parallel ranges और valleys भी बहुत मिलिबो. The Purvanchal comprise the पटकाई हिल द नागा हिल द मणिपुर हिल एंड द मिजो हिल. आ पूर्वांचल कौन कौन मिलिबो तुमको पटकाई हिल नागा हिल मणिपुर हिल और मिजो हिल एमती चारटा हिल तुमको चारटा हिल एमती बहुत सारे हिल अछि किंतु एमती मेजर चारटा हिल एडी मेंशन करा हेछि. तो पूर्वांचल ए सब मिलिबो. द नेक्स्ट पार्ट इज नॉर्दर्न प्लेन दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, do subscribe my channel, watch the video and enjoy geography. Thank you.